to some reactions that have come from members of the government. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। Talking about India fighting terrorism, where does India really stand when it comes to talking terror? You know, this is a very sensitive subject. I was involved in this for a long time. In fact, I'll go back to, I think it was 2015, that the Prime Minister of Israel, Bibi Netanyahu, had asked us to bring religious leaders of the Asian communities to Israel. And he said, no Christians, no Muslims, intentionally. So when we brought the religious leaders there at the end of in the cabinet room, he knows me, so he says, Baba, can you give a message to Prime Minister Modi for me? I said, Mr. Prime Minister, sure, but there were some Hindu leaders. And I know Modiji's respect and association, how he regards them. So I asked the Swamiji, I said, Swamiji, Prime Minister has a message for you. Prime Minister, you know, can you please pass my message to Modiji to visit Israel? You know what the Swamiji's reply was? This Swami Avdeshanand Giri, it's head of the Acharya Sabha, which we helped create for the Millennium Summit. He said, he did not say we'll give you a message. He very emphatically said he will come. I was shocked. But why I'm referring this in context of terrorism? Ever since there's close cooperation between India and Israel, India, Israel and the USA, you will see now that every major, whether it's CIA or the FBI or Scotland Yard, they recognize that the terrorism which was being perpetuated by the Pakistani terrorists at the border, now they call that out. Before they were not ready to believe. So there's been a fundamental shift. And Modi ji has categorically stood with everybody. I mean, just tell me which world leader had the courage, in New York we call it chutzpah, to sit with President Putin and tell him, I have told you privately in front of the media, but I'm telling you personally, this is not the time for war, end the war. He goes with that courage. Which world leader has that? So, I mean, the message is very clear. There is just no room in the world for any acts of terrorism. And unfortunately, we have these hardliners in every religion, in every walk of life. Even in America, we have them. Extreme right and extreme left. Right. The message for any political party or any to govern, to administer, you need the spirit of compromise. Let us not compromise the spirit of compromise. Right. So, we'll take one question. We talk about the Sikh community coming out in support of Prime Minister Modi and his visit. What are your thoughts? What is your impression on that? First of all, I must thank Mr. Dhaliwal, Darshan Singh Dhaliwal. It's because of him that we are here today. He reached out to me, he says, Baba, can you invite? बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा इतनी देर से इंतजार करते हुए, लेकिन ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है कि वो बाहर निकल के आके सब लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया और इतने नज़दीक से उनके साथ जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। We brought lots of love. That's what we brought. प्यार लेके आए मोदी जी के लिए, टाइम लेके आए, so that's what we brought. पर मैं बताती हूँ, मैंने ना रुद्राक्ष की बड़ी सारी माला लेकर आई थी, तो मैंने कहा था इसको पहनाऊंगी और मोदी जी को दिखाऊंगी कि जैसे मोदी जी शिव के भक्त हैं और हम उनको महाअवतार बाबा जी का रूप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम करा है और वो स्ट्रॉन्ग अकेले खड़े हैं और सारे लोग उनके विरुद्ध में जो भी खड़े हुए हैं और वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, तो कोई शक्ति उनके साथ है। मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने 3 बार उनसे हाथ मिलाया और मोदी जी की आंखें देख के और हमारी आंखें देख के भर आई आंखें, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पे न्यूयॉर्क में आए और हम बहुत खुश हैं। हाँ, मैं तो सबसे आगे था। मैंने तो वो सबको नमस्ते कह रहे थे। द मोस्ट हम्बल पार्ट मैंने उनमें देखा कि सीक्रेट सर्विस एजेंट को कह रहे थे चलिए टुवर्ड्स द होटल, राइट, टुवर्ड्स द डोर। उन्होंने कहा कि आई विल कम हियर। मैंने उनकी 3-4 वीडियोस भी ली जब वो आए थे। लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, पैराग्लाइड गिर रहा था, सीक्रेट सर्विस हैज टू पुश इट बैक। इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस।